Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be doing about sentences, phrase, and clause. So let's just begin. So the title of our chapter is sentences, phrases, and clause. We all know sentences, group of words that make a complete sense. उसे को हम क्या बोलते हैं? Sentence बोलते हैं, right? और ये क्या है basically? It is a basic unit of language. एक language की basic unit है जो कि complete thought बनाती है. Birds are flying. Tiger हमारा national animal है. Lion is roaring and farmers they harvest it's his crop, right? Moving on to this kinds of sentences, the first one that we'll be studying is assertive sentences, and there are four types. Assertive sentences वो होते हैं जो क्या होता है, एक फैक्ट होता है, एक ओपिनियन होता है और एक assertion होता है. जैसे कि आप कह सकते हैं Alan went to play match and he could not play the match, right? Next is interrogative जहाँ पे questions होते हैं, right? Question mark के साथ, जैसे कि Who was Silky Bob? Silky Bob कौन है? And did Jimmy Wells arrest his friend? क्या उसके friend को arrest किया? Moving on to the imperative मतलब कोई भी command request करना और to do something. Don't ever touch my phone. मेरा phone छूने की बिल्कुल हिम्मत मत करना. And bring me a glass of water. और मेरे लिए एक glass पानी लेके आइए आप. Right. Moving on to the next is exclamatory जहाँ पे आप sudden emotions आते हैं और exclamatory sentence में exclamatory mark आते हैं जैसे कि what a beautiful scene is this. Alas, my dog is no more. Right. Next is simple sentence वो होता है जिसके अंदर एक subject होता है, एक verb होता है, कभी-कभी एक object भी हो जाता है और modifiers हो जाते हैं और कभी-कभी एक independent clause भी हो जाता है. जैसे कि mother goes to the market, mom जो है market जाती है, I prefer tea to coffee. This too is preposition. Next is compound sentences coordinate clauses होते हैं. They have at least two independent clause होते हैं जिसको हम join करते हैं comma से semicolon से और you can say conjunction से जिसको हम compound sentence. Next is Rohit is poor but his elder brother is poorer than him. देखिए ये क्या है? This is a comparative degree of adjective. Next is I really need to go to work but I am too sick to drive. मैं बहुत बीमार हूँ मैं ड्राइव नहीं कर सकता. कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होते हैं दे आर कंपाउंड सेंटेंस होते हैं एंड दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग जैसे कि सम ऑफ दिस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फॉर एंड नॉर बट और येट सो ओनली बिकॉज देयरफॉर स्टिल ये सब क्या है कोऑर्डिनेट एंड दीज ऑल आर कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेट क्लॉज राइट. कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बोलते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और वन और मोर क्या होंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे. आई डू नॉट नो वेयर विथ लिव एंड जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे रोड्स कैसे होते हैं स्लिपरी. On behalf of this, you have to complete these exercises on your own. Next is what are synthesis? Synthesis क्या होते हैं जब चीजों को हम बनाते हैं. It is a method of combining two or more sentences. हम एक simple sentence बना सके चाहे वो simple हो compound हो या फिर complex हो. Sentences can be formed by using क्या adjective phrases relative clauses होते हैं इसमें with जिसमें infinite prepositions conjunctions और participle phrases होते हैं right. टू और मोर सेंटेंसेस जो होते हैं व्हेन दे आर कंबाइंड टू फॉर्म वन मोर सेंटेंस उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिफरेंट होते हैं by using the rules which is mentioned below. Next is combining simple sentence को आप compound sentence में कैसे combine करते हैं. Synthesis of a simple sentence into the compound sentence it can be done by coordinating conjunctions जैसे कि at not only but also either or neither nor right because yet therefore so, although, for, and so, all these words. So look at the pair of sentences and note that how these conjunctions they have been used for the purpose of synthesis. जैसे कि I went to the market, I bought a loaf of bread and a fresh cheese. मैं लेकर आई. Loaf means कुछ bread का एक loaf का मतलब एक टुकड़ा नहीं होता. Loaf means bread का एक part. I went to the market and brought a loaf of bread and fresh cheese. देखिए उन्होंने क्या फर्क कर दिया है इस दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया और क्या लगा दिए कंजंक्शन लगा दिया राइट. नीतू को फ्लावर्स बहुत पसंद है. नीतू लव्स फ्लावर्स. हर वेडिंग हॉल वाज डेकोरेटेड विद फैंसी ऑर्किड्स एंड मैरीगोल्ड्स एंड ट्यूबर रोजेस. इनसे अब इसके बीच में हमने कंबाइन कर दिया है. नीतू को फ्लावर्स पसंद है इसी वजह से उसका जो वेडिंग हॉल है डेकोरेट हुआ है. नेक्स्ट इज यू विल गेट अ पीस ऑफ ब्राउनी. यू विल गेट अ ब्लूबेरी मफिन. या तो तुम्हें ये मिलेगा या तो तुम्हें ये मिलेगा. किस पेज में क्या लगा दिया और बिकॉज और इज यूज फॉर अ चॉइस. सिमिलरली जय और विजय ट्विंस हैं. दे ओनली हैव अ फ्यू इंटरेस्ट इन कॉमन. दोनों के दोनों ट्विंस हैं बट दे हैव ओनली फ्यू चॉइस. तो दे एंड देखिए ऑल दो आ जाएगा. ऑल दो भी क्या है एक प्रपोजिशन है.
Moving on to this, you have to complete these exercises on your own, and we all know he's a famous author, that is Rabindranath Tagore. Now, moving on to this, that how we have to combine complex to form the simple to complex sentences. जैसे कि synthesis of this to this, it can be done by a noun clause की मदद से हो सकता है. Simple से complex पे जाने के लिए noun clause, adjective clause और कभी-कभी adverb clause. अगर हम noun clause की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, synthesis of a sentence, यहाँ पे function कैसा होगा, noun के जैसा होगा. It may be in the position of a subject or you can say object. और conjunction जो है, it is used to introduce these sentences. जैसे कि his teacher is likely to give him a reward, उसको क्या मिलेगा, reward मिलेगा. His teacher is likely to give him a reward which is something which he deserves, जो वो deserve करता है. तो आपने क्या लगा दिया, एक which लगा दिया. तरुण like my advice, तरुण को मेरी advice बहुत पसंद है. तरुण liked, तो मैं उसको advice करता हूँ. This is what, this is noun and this is verb, ये वाला. Next is by using an adjective clause. We all know by combining these sentences, it does not work for an adjective or more information about the noun in the principal clause of a sentence. जैसे कि शिवा missed the lecture. He borrowed my notes to review. मेरे notes उसने लिए. He missed the lecture. शिवा who missed the lecture. उन्होंने बता दिया वो शिवा वो लड़का जिसने lecture miss किया, इसलिए उसने मेरे notes लिए review करने के लिए. Next is this is my village. I was born. ये वो village है जहाँ पे मैं born हूँ. नेक्स्ट इज एडवर्ब. जब भी हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को, बाय यूजिंग द बाय चेंजिंग द सेंटेंसेस इनटू द एडवर्ब क्लॉज, जैसे कि ऑफ, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, रिजल्ट, कुछ भी आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, ऑल्दो, इफ, सो, बट, एज, वाइल, एक्सेट्रा. जैसे कि बेगर वाज टू वीक टू वॉक. बेगर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, सो बेगर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक. आपने सो लगा दिया, ये बता दिया कि बहुत ही वर्स कंडीशन है. ओ बीइंग चैलेंज्ड, the children ran away. When the children they were challenged, they just ran away. Moving on to this, you have to complete these exercises. Now moving is how to combine simple sentences कि वो क्या बन जाए, एक simple sentence बन जाए, right? You by using a participle. जब भी आपको participle use करना है, मतलब कि एक action complete हो चुका है दूसरा के होने से पहले, तो हम यहाँ पे principal हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम we use having use करेंगे, past participle और being, और you can say past participle to join these sentences. जैसे कि we saw the weather forecast and we decided to postpone our trip to Goa, right? So having seen the weather forecast, देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम अपने ट्रिप को पोस्टपोन कर देंगे. My parents are vegetarians, they do not eat meat. Being vegetarian, मेरे पेरेंट्स जो है वो मीट नहीं खाते. Next is by using an infinitive. Infinitive means कोई भी पर्पस, कोई भी कॉज हो रहा हो. I looked at out of the window of my room and I wanted to enjoy the natural scenery. मेरे को enjoy करनी है. I looked out of the window of my room to enjoy the natural scenery. That's it. I went to Lakshadweep last week and the idea was कि मैं वहाँ पे स्कूबा ड्राइविंग ट्राई करूँ. I went to Lakshadweep last week and to try scuba diving. देखिए वीक कौन सा है, हफ्ते वाला वीक है. एक वीक होता है कमजोर. Both are homonyms having the same word, having the same pronunciation, different spellings, right? Using a noun or you can say phrase in apposition. What do you mean by this word? Apposition means suitable. Apposition is a use of noun and of course phrase that immediately follows a noun. In this note making, it makes a special difference. जैसे कि ताजमहल एक 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में है and it was built by शाहजहां. देखिए ताजमहल जो कि ये है, it was built by शाहजहां. इसी तरीके से, right? Kiran Bedi was the first woman to join the IPS, that is Indian Police Service, and she received the Magase Award in 1994. And this Kiran Bedi first woman to join this and he received this award in 1994. Moving on to this आप by क्या कर सकते हैं, एक preposition लगा सकते हैं noun और gerund के साथ. gerund एक participle ही होता है. sometimes एक preposition और preposition का phrase जो होता है वो use हो जाता है to combine these two simple sentences, or you can say two simple sentences obviously, and this preposition is used with a noun or a gerund. gerund basically जिसके साथ ing आता है. Yeah, Kalidas was a great poet. He was a good dramatist. वो एक dramatist भी है. Besides, एक अच्छा poet के होने के अलावा वो एक अच्छा dramatist, right? Besides means in addition to. The wife heard the news of her husband returned from the war and she was overwhelmed with joy. वो joy के साथ overwhelmed है. On hearing this news, husband returned from the war. जो wife है, she was overwhelmed with the. नेक्स्ट इज by using an adverb. आप कंबाइन कर सकते हैं दो सिंपल सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में, और एडजेक्टिव जो है इट इज चेंज्ड इनटू द वर्ब. जैसे द बेबी वाज क्राइंग, शी वाज हंग्री, द बेबी वाज हंग्रीली क्राइंग. एक साथ आपने कंबाइन कर दिया.
Kavi completed her assignment. She was diligent, means very intelligent. Kavi diligently completed her assignment. Right. Moving on to this, how we have to define a phrase and a clause. We all know already know that sentence is a group of words that make a complete sense, whereas sentence के पास एक subject होता है जो directly state करता है और एक predicate होता है जिसके पास एक finite verb होती है. जैसे कि look at these group of sentences: through the forest, right? Amusing music, scrolling through the garden. So these group of words they make a sense, but they do not have a complete sense. Hence ये जो group है basically इसको हम क्या बोलेंगे? Phrases बोलेंगे. तो phrases वो group of words होते हैं जो complete नहीं होते हैं, but also complete. Group of words that make sense, but वो complete नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दोबारा देखिए, group of words that makes a complete sense, that make sense, but पूरी sense नहीं बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Phrase बोलते हैं. Phrase is usually a part of sentence. Phrase क्या होता है? एक छोटा सा part होता है sentence का. We can add more words. जैसे कि when I walked through the forest, I saw a pride of lions. मैंने lions का झुंड देखा. My father would often play on an music अच्छा play करते हैं. The woman strolling through the window to the garden, वो मेरी aunt है. She is from America, right? Just look at these group of words. The woman who is strolling through the window is the aunt from America, right? तो colored word है this phrase पूरा. It do not constitute a phrase. इसमें कोई phrase नहीं है. इसमें सिर्फ एक subject है, that is who. Finite verb है, that is strolling. देखिए ing आ गया. चिरण में यही होता है. In this way जो group of words है, they resemble a sentence, although they make a sense. Although वो एक sentence नहीं है और ना ही वो एक complete sense बताते हैं. They are just a part of sentence और इसीलिए ही this group of words जिसको हम क्या बोलते हैं? Clause बोलते हैं. राइट. एंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होती है खुद की, इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज. देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस बट नॉट इन अ कंप्लीट मैनर, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज. सेंटेंस तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, सेंस बनाते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाते. बट जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है और वो कंप्लीट सेंस भी बनाते हैं, उन्हें हम क्लॉज बोलते हैं. राइट. So there is a note, you can read it on your own. Like phrase has no finite verb, clause के पास एक finite verb होती है और sentence के पास at least एक finite verb होती है. Sentence we all know it has many clauses as the finite verb has, और एक sentence के पास सिर्फ एक finite verb होगी and it is made up of only one clause. Similarly, जो है phrase वो कभी भी खुद से stand नहीं करते हैं. It can always stand on its own. Sentence खुद से stand होते हैं. Clause may or may not be able to stand on its own, whereas clause can stand on its own means कि सेंस जो है वो कंप्लीट सेंस बनाता है और इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. एक से ज्यादा दो क्लॉजेस होते हैं. Next is kind of phrases: noun, adverb, and adjective. Noun we all know it can be replaced by a pronoun because nouns sometimes pronouns are used in place of nouns in order to avoid the repetitions. So sometimes it will function as a noun. So the very tall education consultant with the roving eyes, the man with the hat, कि बंदा क्या है उस hat के साथ है. Moving on to this, you have to complete these exercises. Moving on to this adverb, के अंदर क्या होगा? It will function as an adverb. उसी को हम बोलेंगे adverb phrase. जैसे कि singer sang for me in a sweet tone, अच्छी सी सुरीली धुन में आप मेरे लिए गाना गाइए. There is a football match on Monday. You have to complete these exercises on the adverb clauses. Now moving on to this adjective, it functions as an adjective of a sentence. जैसे my elder brother is a talented, मेरा elder brother जो है वो बहुत talented है. My elder brother is a student of a great talent. जैसे a brown hair girl, एक लड़की के brown color के hairs है, girl with a brown hair, ऐसे आप बना सकते हैं. You have to study the table and you have to show some adjectives. जैसे कि kind-hearted gentleman, a gentleman with a kind full of he has a heart which is full of kindness. A promising boy, a boy of great promises. Right. Next is a blank page, a page with no writing on it, कि उसके ऊपर कोई writing नहीं है. Gloomy atmosphere, gloomy का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा sad. तो atmosphere which is full of gloom. जैसे कि a diamond studded necklace, a necklace with many diamonds. Stud means पूरा एक एक piece लगा हुआ है. A woolen carpet means a carpet made up of wool. देखिए woolen में डबल एल आते हैं और डबल ओ आते हैं. Moving on to this, you have to complete these exercises on your own. Next is we have to find out the difference between a phrase, clause, and a sentence. Okay, we have defined earlier everything, right? We all know a group of words that has a subject and it has a finite verb of its own. उसी को हम बोलते हैं clause और वो अपने आप में एक complete sense बनाते हैं. So now read these sentences. कुछ sentences को हम read करते हैं. जैसे आशु sat on a wooden chair के ऊपर बैठा हुआ है. आशु bought his chair which was very comfortable, जो कि comfortable.
तो कलर्ड वर्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस, उसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, हेंस वो क्या है, एक फ्रेज है, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं, सेंस बनाते हैं, कंप्लीट नहीं। कलर्ड वर्ड ऑफ ग्रुप इन द सेकंड सेंटेंस के पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बट इट विल नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, इसलिए वो क्या है, क्लॉज है। वो क्या है, क्लॉज है। सम क्लॉजेस के पास कुछ सब्जेक्ट होता है, दे हैव अ फाइनाइट वर्ब, जैसे कि आशु सैट ऑन अ चेयर दैट वाज मेड अप ऑफ वुड, जो कि वुड की बनी हुई है। सिमिलरली भारती केम फर्स्ट इन द रेस बिकॉज व्हिच सरप्राइज हर फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि किससे बने हुए हैं, क्लॉज से बने हुए हैं, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉज, जैसे कि फ्रेज क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फ्रेज इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल ग्रुप है वर्ड्स के, क्लॉज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगेन ये भी है, और ये भी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। अब देखिए क्या, इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, खुद से कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, बट ये कंप्लीट सेंस बनाता है, राइट। और ये क्या करता है, इट मे और मे नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स फॉर समथिंग सम मीनिंग, किसी पे डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, खुद से खड़ा होता है। अगर वो खड़ा नहीं होता है, वो नो लॉन्गर सेंटेंसेस को कभी ज्वाइन नहीं कर पाता है, इट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द लॉन्गर सेंटेंस, राइट। इसके पास कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, इसके पास एक फाइनाइट वर्ब होती है, और इसके पास फाइनाइट वर्ब होती ही। इसके पास कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, इसके पास तो ऑब्वियसली है, और इसके पास इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट दोनों है। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में बात करेंगे, इंडिपेंडेंट जिसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और डिपेंडेंट जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। these sentences जो books हैं, they are written by someone who has thorough knowledge of the subject, की पूरी knowledge है। I will leave now because it's getting too late, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। अंडरलाइन पार्ट जो है, they can stand on their own, खुद से stand हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। However जो कलर्ड पार्ट्स हैं ऑफ द सेंटेंस, वो खुद से स्टैंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए दे हैव टू डिपेंड ऑन द रेस्ट ऑफ दिस इन ऑर्डर टू करेक्ट इट्स मीनिंग। तो क्लॉज एज अ डेफिनेट वर्ब होती है, विच मेक अ कंप्लीट स्टैंड ऑन इट्स ओन, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज और रिटेंसिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिसके पास एक फाइनाइट वर्ब होती है, बट कोई भी कंप्लीट नहीं बनाते हैं, बिकॉज इट हैज टू डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, जैसे कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। राधिका लेफ्ट यस्टरडे, राधिका हैज रिटर्न सिंस, राधिका वापस आ चुकी है। राधिका लेफ्ट यस्टरडे, शी हैज नॉट रिटर्न सिंस, वो अभी तक नहीं आई है। तो बाय यूजिंग दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि एंड, हमने दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया है, जो कि ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस में, एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रामेटिकल में, ग्रामर में ए आता है, ई लगाते हैं बच्चे, राइट। तो क्लॉजेस दैट आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उसी को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, और यू कैन से कोऑर्डिनेटिंग मेन क्लॉज, राइट। नाउ कम्स नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या सा फंक्शन होगा, नाउन के जैसे ही होगा, एक्ट एज अ नाउन इन द सेंटेंस, इसलिए नाउन क्लॉज है। जैसे कि वी होप्स टू क्लियर द इंटरव्यू, बहुत ही आसानी से इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, हमें पता है ये नाउन फेज है, इसके पास ऑब्जेक्ट है, दैट इज होप्स, राइट। वी होप्स दैट शी कैन क्लियर द इंटरव्यू इजीली। नेक्स्ट इज योर थॉट्स गिव शेप टू योर कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर को देते हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट योर थॉट्स that gives the shape to your character, of course our thoughts. Deepika seems to be a woman of her words, अपनी पते की पक्की लड़की है, वो अपने वर्ड्स पे स्टिक रहती है, it seems that Deepika is a woman of her words. This more about noun clause के बारे में हम और पढ़ेंगे। उसके कुछ functions होते हैं noun clause के, जैसे कि noun clause के पास subject of a verb भी होता है। What we ate yesterday, it was very nutritious, and whosoever the story uh, जो राई है, it will crash it to the tree. Next is noun clause as a subject. Detective determined that the robber was the culprit. Robber ही है वो culprit, and Amit offered whoever attended the event of a event a discount. Right? Noun clauses जो होते हैं वो complement होते हैं, verb को complete करते हैं. जैसे the news that they were expelled for plagiarism surprised us all. What do you mean by plagiarism? Stealing of thoughts. विचारों की चोरी करना, प्लेजरिज्म मतलब चीटिंग कर लेना, ठीक है। यस, प्लेजरिज्म का मतलब आप चेक करते हैं, ये रिसर्च पेपर में चेक किया जाता है कि आपने कहीं कॉपी तो नहीं किया। द थॉट दैट ही वुड बी ऑन हिज ओन, इट ब्रोक हिज हार्ट, अपना उनका दिल तोड़ देंगे। नाउन क्लॉजेस सब्जेक्ट के भी होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंफिनिटिव। फादर नीड्स टू नो, क्या उसका सन जल्दी जा चुका है। शिवा शी जस्ट इनकरेज अक्षित टू रिकमेंड, कि वो कौन थे। नाउन क्लॉजेस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पार्टिसिपल का। आई एम प्लीज दैट यू हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम दिस वे, इस प्रॉब्लम को आपने ऐसे डेल किया।
वाशु जो है he shouted at this वंशु shout at वासु thinking कि उसके intentionally सिर्फ को हिट करने। नाउन क्लॉजेस का ऑब्जेक्ट होता है prepositions का, जैसे कि आर सस्पेक्ट डिमांड्स ऑन कि भाई किसके मर्डर के वेपन से हुआ है ये। द पीपल वांटेड टू हियर अबाउट व्हाई यू आर रनिंग फॉर कांग्रेस के लिए क्यों पड़े हो। नाउन क्लॉजेस एपोजिशन टू अ नाउन मीन सूटेबल टू अ नाउन। द रिपोर्ट दैट ही इज एब्सकॉन्डिंग मतलब एब्सकॉन्ड मीन्स टू हाइड, वो बिल्कुल झूठी है। नोबडी बिलीव्स योर स्टेटमेंट दैट यू डिड नॉट गेट अ फेयर चांस, कोई कि आपको फेयर चांस नहीं मिली, ये आप झूठ बोल रहे हो। मूविंग ऑन टू दिस, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज। Okay. Now next is adverb clause. Now moving on to this adverb clause, we all know it does the work of an adverb, and we all know what are adverbs that qualifies the verb, right? इसके अंदर मीनिंग क्या है, वर्ब का भी होगा, एडजेक्टिव का भी होगा और अनदर एडवर्ब का भी। वी शुड पे द बिल्स बिफोर लिविंग द टाउन। टाउन में यहाँ से छोड़ने से पहले आप अपने सारे बिल्स को क्लियर करें। यू शुड पे द बिल्स बिफोर यू लीव द टाउन, राइट। दिस इज एन एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज है इंडिकेट कि आप अपने बिल कब पे करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज बीइंग ओल्ड एंड वीक। आप ओल्ड एंड वीक हैं, शी रिमेन्ड एट होम, वो घर पे रहती हैं, राइट। दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज which is giving what, which is giving the person that why she remained at home। तरीके से as she is old and weak she will remain at home, वो घर पे रहेंगे, then adverb। We will suffer financial loss in any of the case, any further delay में, and we will suffer a great financial loss if there is any further delay, अगर हुआ तो हमें loss होगा। More about adverb clause. Adverb clause usually modifies the verb, which means that it tells something about the verbs only. Yes, something about an action which suggests by another clause. It may tell the time, might tell time भी बताएगा, place भी बताएगा, adverb of place, adverb of manner, right, of the action, or it may tell the cause and purpose। ये cause और purpose भी बताएगा, right। तो इफेक्ट भी बताएगा एक्शन का। इट में इंडिकेट कि क्या कंडीशन है कि एक्शन किया जाएगा। इट में कंपेयर और यू कैन से contrast these actions। So thus adverb clauses they are of these types। adverb clause of time है कि while, after, when, before, since, for, as long as soon as, where, whenever, till, ये सब। when mother called me I was sleeping। जब मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया उस टाइम पे मैं सो रहा था। I have played hockey since I was a young boy। young age पे I started playing hockey। कुछ adverb clause होते हैं, they are introduced by conjunctions, जैसे कि where and where and wherever। जैसे you can live wherever you like, आप चाहते हैं वहाँ रह सकते हैं। they asked me to find where you were, कि आप कहाँ हो। Next is adverb clause of a purpose, they are introduced by conjunctions, जैसे कि that, so that, in order, lest, right। So I am studying English so that I can use the internet। मैं इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ जिससे कि मैं इंटरनेट कर पाऊँ। adverb clauses जो होते हैं उनके कुछ reasons होते हैं, and they are introduced by conjunction, जैसे since, as। she left early since she had a meeting। उसने वहीं पे छोड़ दिया since she meeting है। because it was raining I could not go to school। मैं स्कूल नहीं जा। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ अ कंडीशन, क्योंकि कुछ इंट्रोड्यूस होते हैं कुछ के साथ, जैसे वेदर, अनलेस, इन केस, सो लॉन्ग, सो प्रोवाइडेड, एक्सेट्रा। जैसे कि इफ यू कम टू मी आई विल गिव यू अ सरप्राइज, इन केस यू नीड मी आई विल बी एट टॉम्स। मैं क्या हूँगा, टॉम्स का हूँगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट्स दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय दीज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट, जैसे कि so or such। The subways they were such a mess that people hated to ride them, right। it was so cold that I could not go out of it। मैं वहां नहीं जा पाया। एडवर्ब क्लॉसेस कंपैरिजन के लिए भी होते हैं, देन, एज, सो, ये सब। सॉरी इज नॉट एज वाइज एज यू थिंक, जैसे आप सोचते हैं वैसे नहीं है। आशु वर्क्स हार्डर देन आई, इससे ज्यादा अच्छा काम। एडवर्ब क्लॉज कंसेशंस का, दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय although, though, not with understanding, even though, however, that, ये सब। although it rained, everyone enjoyed the parade। सबने parade को enjoy। verb clause of manner, they are introduced by conjunction, जैसे कि as if, just, ये सब। निकिता looked as if she was a princess, कि वो एक princess हो। कुछ contrast के लिए यूज होते हैं, जैसे कि while और whereas, मतलब कि तो आप contrast का मतलब comparison करना, right। white भारती is all in white, और नेहा क्या है, black में है। तो you have to complete these exercises on the behalf of this that we have studied। Moving on to this adjective clause, जिसमें function करेगा sentence as an adjective, right। जैसे कि the house that Lily bought, जो house है जो लिली लेकर आया वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, huge, enormous means huge। the shirt that she gave me, उसने जो shirt मुझे दी है वो बहुत बड़ी है। the highlighted word in the sentence that Lily bought और that she gave me, वो क्या है, एक adjective clause है। next is you have to look at the few more examples, जैसे कि
The experience that taught me a valuable lesson which is never to be forgotten. The experience that has taught me a valuable lesson I shall never forget. मैं कभी नहीं भूल पाऊँ. We need a teacher 3 years teaching experience. जिसके पास 3 साल का experience हो. We need a teacher who has a 3 years of experience. Right. Next is adjective clause है. Adjective means विशेषण that qualifies noun and a pronoun and it usually answers the question which or you can say what kind of work you are doing. So the book that I bought from the library, it is due tomorrow. भाई उसकी कल due date है. I have to return it. So adjective clause होते हैं, it is usually introduced by the words जैसे कि who, whose, which, that, right? Who is used for living beings, which is used for non-living thing. Very important, very very important. Please write down this. And animals that is used for both, right? Which is choice के लिए भी use किया जाता है. Children who belong to this generation वो बहुत ही ज़्यादा smart हैं. And I admire the Professor Brooks whose books were stolen. Right. Next is sometime एक adjective clause जो होता है, they are introduced by the words जैसे where, when and why. क्योंकि हमें वो क्या बताना होता है, this is the time, place and reason. देखिए देखिए place, time and reason respectively. Place where, right? He did not wake up at until 7 a.m. when the sun was rising. जब तक 7 नहीं बजते तब तक वो उठती नहीं है. I know a place जहाँ पे white roses grow करते हैं. समटाइम इट इज पॉसिबल कि आप ओमिट कर दें इंट्रोड्यूसिंग वर्ड को, जैसे कि द वाटर यू आर ड्रिंकिंग वो बिल्कुल भी क्या था, प्योर नहीं. द वाटर विच यू आर ड्रिंकिंग इट्स नॉट प्योर, वो चॉइस में आ गया. द फूड शी प्रिपेयर्स इज वेरी टेस्टी एंड द फूड दैट शी प्रिपेयर्स इज अगेन वेरी टेस्टी. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज शुड बी प्लेस्ड possible to the noun because it is preferably next to the noun. Rajendra Prasad, he was the first president of India who believed in simple living and हाई थिंकिंग. ताजमहल कहाँ करता है, आगरा में है एंड इट इज बिल्ड बाय मेनी स्किल्ड आर्टिशियंस ने बनाया है इन शाहजहाँ के. On behalf of this, you have to complete these exercises. So that was all about clauses, sentences that we have studied. Please go through it, learn all the concepts and stay blessed. Thank you.